आप किसी को शेयर करके देखिए, खुद करके देखिए, एंड आई प्रॉमिस यू, you will feel excellent, you will do excellent, you will excel yourself. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई भी बदलाव, कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं। You may be smoking cigarettes, you may be drinking, and you may be overeating or whatever. तो ये बदलाव चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे विल पावर। कोशिश करके देखिए, आपने तो कोशिश की होगी। This will power take you for say another week. मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप कोशिश करके देखिए। चेंज योर बिलीफ सिस्टम, अपनी धारणा, अपने परसेप्शन, उस पर काम करना है। और एक बार आपने परसेप्शन किसी चीज को लेकर चेंज किया, तो यकीन जानिए आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेंगे। Only willpower won't do anything. It won't be functional after say 2-3 days or 2-3 weeks maximum. This is a mind game. You don't need any willpower after that. आपकी धारणा बदली, और धारणा बदलने का मतलब ये नहीं कि आपने वो बात समझ ली। धारणा बदलने का मतलब होता है, परसेप्शन चेंज होने का मतलब होता है that you have internalized, that has gone into your system. उसके बाद देखिए, life will be magical. Whatever you want to do in life, you can do that. It is not just changing your habit, but anything you want. So, what's the best way to change your belief system? ये जो मैं अभी बता रहा हूं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का, तो उसका तरीका क्या होगा, उसका सलीका क्या होगा? There can be lot many methods, like long trusted, traditionally trusted yoga, or the most modern technology, NLP, neuro-linguistic programming. So choose any one. That's your choice. It's an excellent technology. आप शेयर करना चाहें ये आइडिया, आप किसी को शेयर करके देखिए, खुद करके देखिए, and I promise you, you will feel excellent, you will do excellent, you will excel yourself. Bye for now.